शैंपेन तो खोल सकता हूँ। भाई वीडियो मुझे लगा मैं काफी अरे सुनो डायरेक्टर स्पीकिंग आ जाओ अरे मेरा स्टेज अरे महिलाएं काफी महिलाएं मैं काफी आशा के साथ यहाँ बैठा हुआ था। डायरेक्टर स्पीच आ रहा है। ये मेरा पहला रोस्ट होगा बड़े एंटिसिपेशन के साथ, बट रोस्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फीडबैक देना पड़ेगा। इसमें लिखो रोस्ट कुछ जम नहीं रहा, मजा नहीं आया। काफी लोगों ने कहा नहीं है, काफी लोग जो रिहर्सल में काफी कुछ बोलते हैं बट अब काफी साइलेंट है। आ जाओ इधर, बट nevertheless I will say I have been extremely fortunate to have had an exceptional team for my first production, for which I'm very grateful. And most importantly, I think this entire journey couldn't have been possible without my exceptional cast. Wow. I think from You mean the senior one? I think I think thank you Murtha for covering all the production teams. Truly, this has been an exceptional. It takes a village to make things happen, and this really wouldn't have been possible without everyone's hard work, both people who are here and people who are not here. Less has been said about the cast, but I will say a few things. वीडियो बंद कर दिया मैंने। नहीं वो हम बाद में I won't make a roast, so I'll just stick to With a tear from the left eye. the tear from the left side. 45 series. No, he doesn't want to do the roast. He just wants to give the Yeah, I'll just give like feedback as I see it, right? Madhura, मेरे को क्यों पहले? I think वो weakest actor no matter तेरे पे आता हूँ। No matter what is being said, I think the fact that you're an accomplished dancer, if anything, helped this play immensely. Yes. Because the murder scene, I could not envision the murder scene without you having. Without Madhura in it. I agree. And I think that just took it so really well. Yes. I think you're so light on your feet. And most importantly, as Nidhi, there was a certain sensibility of vulnerability that I was seeking, and you just brought that to the floor. With Pragya, like the best part about a double cast is like you get. टिकट ज्यादा बिकती है। सच से शुरू करना, सच हमने साथ मार्केटिंग टीम में रोहित को रिक्रूट क्यों नहीं किया आज तक? इसलिए इस कारण Because he does not think about value for customer. He thinks about dollar value. But having said that, Pragya, your micro expressions are to die for. And I'm sure Rohit, not this one, has probably seen that immense number of times. But we were fortunate enough to see it. And I was particularly fortunate enough to see it multiple times over 3 months. Yay! इतने लेट से क्यों कराए? नहीं बॉटम लाइन कह रहे थे अभी सही था। क्योंकि मुझे माइक्रो से नैनो तक पहुंचना। बॉटम लाइन तो सही कह रहा था, वीवीआईपी वालों को ही दिखाया। अभी तुझे जाना है, इसके लिए मैं तेरी बात ही कर ही लेता हूँ। रोहित के साथ क्या था, मैंने इसके साथ हेवदन में काम किया, तो ऑलरेडी मुझे आइडिया था कि हमारा कैसा जमेगा। The thing is with every person that you work with, there is a certain rhythm, and with Rohit I'd had the good fortune that I had already worked with him. But the fluidity that Rohit shows on stage is unparalleled. I've never seen an actor who's so fluid and moves so light on his feet across so many emotions of Ronnie that was so critical to bring that briskness, crispness and slickness of the character. And I think the dress that you're wearing today does justice to that. And I forgot to mention, actually credit Pooja ka. अब रोहित
बाद में खड़ा था तो चल दे दी। नजरें हटा नहीं पा रहा था। हाँ हमारा है हेवदन मिक्स Internal romance. and coming to Navjot since we are on the topic of Ronnie Wow. I think there are few actors where their stage presence just mesmerizes you. Yes. When Yes. the- Yes. Even if I look past his baritone and his voice, I think the teherav and the gravitas that Navjot brings to stage, it is hard to imagine that he's coming back to stage. after 8 years. I know. वैसे एक चीज है, तू रोस्ट नहीं कर रहा है तो मैं ऐड कर ही देता हूँ तारीफ में। ये रोस्ट नहीं था। नहीं आवाज अच्छी ठीक है, नहीं थी, वो present झूठी अच्छी तारीफ वाले तो लेकिन डबल कास्ट का एक फायदा डेफिनेटली है, जब भी दोनों कास्ट साथ में परफॉर्म करते थे ना और एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं उस पे आने वाला हूँ। तो that's So definitely- I think the beauty of that is, and thank you for bringing that up. I think it started with this being sister bonding with Nidhi's. That started out. Yes. It was probably the first bond that I had seen. Yes. And it slowly translated to a bond among every pair of characters. And that made me realize, learning for me was, why did I not have joint rehearsals sooner? Because I think one of the things that I realized was it not only brought the team a lot more closer together, it also helped with cross-pollination. And I think that was probably the biggest learning. Cross- वही इसीलिए शब्द याद किए हैं मैंने। एक मिनट, क्या था मतलब? क्रॉस पॉलिनेशन। पूछ लिया, आदित्य पूछ लिया मैंने। प्लीज ट्रांसलेट। मैं हाँ, वही आदित्य पूछ लिया मैं मैंने। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं चीट शीट बना दूंगा। इस कॉम्बोबुलेट कर देगा। और अब जब इन्होंने वो खोला ही है तो शेखर की बात है। Unfortunately दूसरा शेखर मुझे दिख नहीं रहा। घर गया। Unfortunately वो होता तो मैं ये कह पाता कि जिस डेडिकेशन से, तो जब रोहित और मैंने हेवदन किया था, हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था, उसका नाम था पतली कमर। अब पतली कमर का एजेंडा ये था कि हम दोनों को वेट लूज करना था और बॉडी बनानी थी। बट पतली कमर 2.0 शुरू हुआ डायलैम से। अब इसके जो मेंबर्स हैं उससे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया शेखर ने। और मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट इस चीज का फायदा उनकी बीवियों ने तो जरूर देखा होगा। बट every time I have seen Shekhar in the last month, both Shekhar, I have always felt, wow, they look so amazing on screen. Don't you agree? Yes. 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 100%. And of course, the costume team makes them look कपड़े भरेगा। कपड़े अच्छे पहने ऐसे करता I think from an acting point of view, everybody knows Chaitanya is an amazing actor. But I think the one thing that I have seen Chaitanya do as Shekhar is really evolve himself in terms of getting into the posture of the character and the body language of the character. एक अभी भी छोड़ना। Because part of what Shekhar's character had to communicate was also through how he conducted himself, and I think Chaitanya and Anush both did full justice to that. So thank you. Anush with accent. Anush with Now accent. the problem with Anush, the problem with Anush was he was often confused whether he was in Natak or he was in a British drama. Because I stay at the fourth season. And धनंजय ने अगर कहा है कि हाथ पॉकेट में रखना है तो जब मैं लेखक हुआ करता एक और है जो मैं अक्सर देखता था, मैं ऐसे कुछ इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा। और अगर मैं अनुष की बात करूं तो एक पोज है जो अनुष का जो मुझे बहुत यादगार रहता है, जैसे मैं कहता हूं मॉडल कॉम्बैट पोज। और जब भी अनुष एग्रीवेट हो जाता है, he forgets that Dhananjay has told him hands in the pocket and he has to remove them and he has to do Nidhi. तब की बात क्यों मान रहे हो? कमाल है, क्योंकि उसी ने दामले के हाथ से चाबी निकाली और उसी ने दामले और जब निधि को दरवाजा खोला हो तो निधि तो ऐसा नहीं कर सकता। और एक्शन फॉलोड बाय दिस।
So yes, followed by the hair flip. और अब बात करते हैं हमारे प्यारे शिंदो की। क्योंकि दो है। With Anirudh, what I see an embodiment of a true thespian of theatre. Yes, Yeah. yes, From yes. his audition to what I've learned so much just looking at you and seeing you perform, and the focus that you bring to stage and the worship with which you approach stage is remarkable. And that's for everyone to see. आपके आने से पहले ही तालियां बज जाती हैं। And Pragya, thespian is not a dirty word. Just say it. गलत मत सोचना। मुझे और रोहित दोनों को समझ में नहीं आया तो हम दोनों नहीं ये वर्ड पता है। बगल में खड़ी है। नहीं ऑफिस में जब टिकट बेचने होते हैं आई एम अ thespian ऐसे सीखने पड़ते हैं थोड़े बहुत। With Aniruddha, I've almost found a jugalbandi where if I tell him Aniruddha मुझे ऐसे कुछ चीज चाहिए, he takes that and he just internalizes and turns it into something. मैं नहीं करूँगा। Completely. He just takes it and doesn't do it. He's very grounded. Having said that, I think we all need to appreciate how remarkable it has been for a non-Marathi. Oh Yes. Yeah. Who not only learn Marathi. So my first conversation with Harsha was, so I didn't have a Shinde. I didn't have a second Shinde at the end of audition. But I somehow felt that Harsha would fit that part. And I remember getting on a call with Harsha and talking to him about whether or not he would be a good fit for Shinde. And at that time, I had two plans. So One plan was... I was, by the way, witness for it. So he and I used to talk. He was convinced, Harsha, that you would be the second Shinde. He was convinced. विकास मुझे पता है हर्षा करेगा, मुझे हर्षा को लेना है, तो मुझे पता है हर्षा करेगा. And I think part of that confidence came from one thing that I have seen Harsha do. Shout. Shout. लोगों का shout की बात कर रहा हूँ। अच्छा तू प्रैक्टिस कर रहा था मैं Harsha's हर laughter. बार मिलके हंसता था बोले क्यों हंस रहा है Amazing laughter. But जिस शिद्दत से हर्षा ने मराठी सीखा, Oh, amazing. Yes. he took on the challenge Yeah. to not only. So my backup plan was अगर हर्षा मराठी शिंदे नहीं बनता, I would have made him a Shetty. I had shared this with Vikas, I shared this with a couple of people. But Harsha was determined that I will be a Marathi Shinde. Yes. For a few weeks, Harsha would look at Aniruddha and see what are the mannerisms. But I think in the last month of rehearsal, Harsha just made that character his own. Yes. And I think he embodied Shinde in a very different way, but a very beautiful way. And in spite of not knowing Marathi, he added many mannerisms, and I in fact spoke more Marathi than I expected him to speak on stage. To a point कि you know होते हैं actors की जब हम एक और लाइन घुसा देते हैं, ad lib कर लेते हैं, हर्षा मराठी में ad lib करेगा. लेकिन हर्षा का मराठी इतना अच्छा हो गया, हिंदी में स्ट्रगल हो रहा था। खास करके एक वर्ड पे, जूते पे। नहीं, हर्षा के साथ स्ट्रगल हिंदी में नहीं था. हर्षा के साथ स्ट्रगल था जो एक्चुअली ऋत्विक और मेरी बात हुई थी, बेलगांव और जलगांव के बीच का बॉर्डर भूल गया. और ऐसा क्यों था? क्योंकि जब भी हर्षा सोचता था कि मैं मराठी बोलूंगा, उसका अंदर का कन्नड़िया बाहर आता था और वो ट्रांसलेट 4 वर्ड्स में होता था. वो, अरे, हाँ, लेकिन उसने तेरे उस फीडबैक को भी सीरियसली लिया, बाल खुजाना। तो अच्छे से बहुत खुजा पाता था इतना खुजाया कि अंजलि मुझे बोलती है, तूने दोनों शिंदे को कर्ली हेयर सोच के लिया. खुजा के बात करती हो गए. इसको बाहर ऑडियंस में लोग आके मराठी में बात करते हैं. मुझे कहते नहीं, आई एम नॉट मराठी. इट वाज दैट गुड. So, kudos.